हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज और निफ्ट 2026 का जो है वो पेपर हो गया। आई होप सबका बेटर गया होगा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आए थे, क्या लास्ट ईयर से कुछ डिफरेंट था या लास्ट ईयर जैसा ही था। अगर मैं बात करूँ तो सेम जो एग्जाम पैटर्न था जो लास्ट ईयर 2025 में था, सिमिलर आपका 2026 में था। ऐसा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। हाँ, जो थोड़े बहुत वीक थे सब्जेक्ट में, टॉप टॉपिक्स में, इन डेप्थ में, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा पेपर रहा, आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो इन पे हम डिस्कस करेंगे। और एक हम पोल भी क्रिएट करने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको वो पोल भी दिख जाएगा, तो उस पोल में भी आप रिप्लाई रिप्लाई करिएगा, जिससे कि हम एक बेटर रिस्पॉन्स आपको दे पाए। ओके, मैं स्टार्ट करूंगा कि निफ्ट 2026 जो है, अगर मैं इस एग्जाम को ओवरऑल रेट करूं तो ये था इजी टू मॉडरेट ओवरऑल। ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसलिए नहीं था क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीजें नहीं थी। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि कई बार एग्जाम में कुछ भी, जैसे कि एनआईडी एग्जाम, एनआईडी अगर 2026 आप देखोगे तो एनआईडी 2026 कैसा हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। रीजन उसके पीछे अनप्रिडिक्टेबल का एनआईडी का, क्योंकि वहां पे इस बार एप्टीट्यूड ही नहीं था, पूरा का पूरा पेपर उन्होंने ड्राइंग कर दिया। जब भी ऐसा कुछ मेजर चेंजेस होते हैं तो पेपर क्या हो जाता है आपका, डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कोई मेजर चेंजेस थे नहीं। यहाँ आप देखोगे ओवर, और अगर मैं इसके सेक्शंस की बात करूं सो थोड़ा सा टफ होगा जीएटी सेक्शन, जीके। तो हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें पार्ट ए एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट पार्ट था आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, या मैं जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसको VARC भी बोला जाता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या होगा बेटा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपका जो पेपर का जो ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करूं तो इजी टू मॉडरेट। ऐसा नहीं है कि मेरे रेटिंग से ही ये कुछ भी है, बिकॉज ये आप लोग या स्टूडेंट्स जो आके मुझे हम लोगों को बताते हैं कि, और एग्जाम सेंटर के बाद भी आपने देखा होगा जिन्होंने भी इंदौर सेंटर या कहीं पे इंदौर सेंटर में, तो वहां पे हमारी टीम रहती है। आपने लखनऊ सेंटर देखा हो या कलकत्ता सेंटर, तो हर सेंटर्स पर कोशिश करते हैं, हमारी टीम के लोग मिलेंगे जो स्टूडेंट से रिव्यूज लेते हैं। और कुछ हमारे स्टूडेंट है एग्जिस्टिंग, वो आके हमें रिव्यू देते हैं, उस बेसिस पे हम इसका ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की मैं बात करूं, ठीक है, एमएफएम का भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। रीडिंग कॉम्प्री अपर अभी नहीं, आप उसके लिए 6363286363 पे कनेक्ट कर लेना, वो कनेक्ट कर देंगे, देन हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी में आप देखोगे, बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड थे, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे। बट इस बार जो हम बोलते हैं, हर बार पैसेज बहुत सारे आते थे, इस बार पैसेज कम थे। पैसेज की जगह पे क्या था, VA यानी वर्बल एबिलिटी और आपके वोकैब बेस्ड प्रॉब्लम थे। सेकंड में बात कर रहा हूँ जनरल नॉलेज, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उसके पीछे रीजन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के पीछे रीजन, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो स्कीम एंड स्टैटिक जीके, जब भी गवर्नमेंट स्कीम या स्टैटिक जीके जो प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनको कवर नहीं करते। ज्यादातर स्टूडेंट ट्रेडिशनल जीके या बाकी चीजों पे का फोकस रहता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, है ना, रेट करूंगा। सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लास्ट ईयर जो पेपर अगर किसी ने 2025 का सॉल्व किया होगा, सिमिलर पेपर था 2026 का। जैसे लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम आउट ऑफ द बॉक्स था मीन मोड मीडियन, इस बार भी सेम प्रॉब्लम था मीन मोड मीडियन। ऐसा कुछ नहीं था जो डिफिकल्ट हो, हमने अपनी क्लासरूम में कवर किया था। ओके, नेक्स्ट है अगला लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था, और इसमें भी वही कॉन्सेप्चुअल एंड ट्रिकी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अलग से पूछा हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अगर मैं डिटेल में जाता हूँ, डिटेल एनालिसिस में, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में आप देखोगे पैसेज था, लेकिन कम पैसेज थे लास्ट ईयर के कंपोजिशन एंड कंपेयर में। कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा ज्यादा था आपका। इसके बाद आप देखोगे तो कंपेरेटिवली ज्यादा अटेम्प्ट के। अगर यहाँ जीके की मैं बात करूं, तो एक तो ये आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, दूसरा आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज, ब्रांड लोगो, भारत रत्न, क्लासिकल एंड फोक डांस, यहाँ से रिलेटेड। सो बेटा मैं उस पर भी डिस्कस कर लूंगा, अभी हम क्यूए सेशन स्टार्ट करेंगे बस, है ना। Q&A सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं बात करूं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पेरीमीटर, अगर मैं बात करूँ एरिया वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीन मोड मीडियन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इन पे रिलेटेड प्रॉब्लम था। लॉजिकल रीजनिंग में आप देखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, डायरेक्शन सेंस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, मिसिंग फिगर सीरीज, इन पे रिलेटेड प्रॉब्लम था। अब यहाँ से हम क्यू एन ए सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को, बिकॉज हमारे पास जो डेटा है प्लस आप लोगों की हेल्प से यहाँ पे हम चीजें डिसाइड करेंगे। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में जो गुड अटेम्प्ट है, अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट जाता है वो 30+ जाता है। कितना जाता है गुड अटेम्प्ट? 30+। आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है ना, कमेंट में आप बता सकते हैं आप लोग। सो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अगर मैं बात करूं वीएआरसी में आपका अटेम्प्ट कितना था? अकॉर्डिंग टू मी 30+ जो है वो गुड अटेम्प्ट था, या किसी ने 35 भी किया होगा। 30+ यहाँ पे क्या था? गुड अटेम्प्ट था। इसके बाद मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा बी एफ टेक में क्या चीजें होंगी, बी डेस और बी एफ टेक। आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया था? यस। साहिल, उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा ना। हाँ, मैं डिस्कस कर लूंगा, इतना डिटेल डिस्कशन नहीं होगा जैसा कि इसके बारे में डिस्कस होगा। सो आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए थे जरा? नेक्स्ट, जीके। ऑलमोस्ट अगर किसी ने 25 में से आउट ऑफ 25 जो था 13+ किया, अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 12 to 14 को एक गुड अटेम्प्ट में कंसीडर करेंगे। एंड लॉजिकल रीजनिंग में अगर किसी ने मतलब 11+, बिकॉज यहाँ पे 15 प्रॉब्लम्स थे, सारे के सारे इजी थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, बीडेस एंड बीएफटेक कंबाइंड। ओके, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा, गुड अटेम्प्ट है बेटा। नेक्स्ट, अब कट ऑफ क्या होगा और ये सारी चीजें, अब मैं गुड अटेम्प्ट पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की मैं बात करूँ निफ्ट के लिए। निफ्ट ओनली बीडेस, ओनली बीडेस की अगर मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूंगा तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट 70+ है। अब इसके ऊपर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए। सपोज किसी ने 95 अटेम्प्ट किया, अगर 95 अटेम्प्ट किया तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बेटर होनी चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा अटेम्प्ट किया, अगर आपका एक्यूरेसी ठीक नहीं है और आपने ओवर अटेम्प्ट किया तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपने अटेम्प्ट किया, नो डाउट अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट बोलता है सर क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब सॉल्व हो रहा है बिल्कुल करना चाहिए। आपने 95 किया है और आपके 95 ही करेक्ट है तो वेल एंड गुड। बट आपको लगता है कि आप ओवर अटेम्प्ट, होता है ना कई बार स्टूडेंट तुक्का मार देता है, वो नहीं होना चाहिए ना। सो बेसिकली तुक्के नहीं मारने, जो जितना बनता है उतना। यस बेटा, हम एमएफएम ऑल्सो डिस्कस करेंगे हम। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे निफ्ट, बी डैश एंड ना, बी डैश एंड बी एफ टेक। अब बी एफ टेक अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएगा बी डैश एंड बी एफ टेक में। यहाँ जो 100 का था वो कितना हो जाएगा जाके 150 हो जाएगा। अब बीएफ टेक में प्रॉब्लम्स क्या थी आपको पता हो, इस बार जो है उन्होंने हायर मैथमेटिक्स भी पूछ लिया था, सबको पता हो कि मैट्राइसिस भी था, डिटर्मिनेंट्स टाइप के प्रॉब्लम थे, पीएनसी था। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी, जिसने भी पीसीएम था और उसने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, सो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम थे, हमारा ही है ना। यस बेटा, डिस्कस करेंगे हम ना। फाइंड मी फ्लोरल डिस्कस करूंगा मैं अभी। सो मैं बी एफ टेक पे अगर डिस्कस करता तो बी एफ टेक में जो भी पीसीएम स्टूडेंट था तो उसको एक एक्स्ट्रा एज मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिला। रीजन बिकॉज, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या था सबको क्लियर होगा कि बी एफ टेक वाले के पास एक एक्स्ट्रा एज क्यों था। उसके पीछे जो पीसीएम से था, पीसीएम प्लस बी बी एफ टेक अटेम्प्ट किया, क्योंकि 11th वो 12th के एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम डायरेक्टली बी एफ टेक में थे। सो अगर वहां पे आप देखोगे तो ओवरऑल अटेम्प्ट अगर मैं देखूंगा गुड अटेम्प्ट कितना होगा। सो निफ्ट, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ना। ओवरऑल अगर मैं बी एफ टेक के लिए गुड अटेम्प्ट देखता हूँ 100+, बिकॉज इतना इजी भी नहीं था, है ना। 100+ जो है वो गुड अटेम्प्ट था किसके लिए? बी एफ टेक के लिए। किसी ने भी अगर 100+ अटेम्प्ट किया तो देन बी एफ टेक के लिए बहुत बेटर अटेम्प्ट था वो। और
बी डेस के लिए अगर मैं बात करूं तो 70+ था बी डेस के लिए। अब इसके बाद आता है आपका एम डेस। सेम चीज वहां पे एमडेस के लिए भी थी। एमडेस के लिए अगर मैं पार्ट ए के अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 75 या 70+ जो था वो आपका गुड अटेम्प्ट है जिसने भी किया। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम नहीं था कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो या फिर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो वहां पे। नेक्स्ट अगला मैं बात कर रहा हूँ एमएफएम। अब एमएफएम में होगा क्या, यहाँ पे केसलेट्स जिसने बेटर किए हैं, ओके, उसके लिए बेटर थी चीजें। बिकॉज अगर मैं बात कर रहा हूँ एमएफएम की, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट या जो एमएफएम का, यहाँ पे सबसे पहला आपका इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वीएआरसी जिसने बेटर किया होगा, जीके बेटर किया होगा। और क्यूए में अगर मैं बात करूँ तो ओके ओके था, या एलआर जो है उसमें ओके ओके था। सो अगर मैं एमएफएम के लिए मैं बात करूँ, बिकॉज सिंगल पेपर होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स केसलेट्स और इन पे, सो 110+ एक अच्छा अटेम्प्ट है। ओके, 110+ क्या हो जाएगा, एक बेटर अटेम्प्ट हो जाएगा किसके लिए, एमएफएम के लिए। मतलब 110 तक अगर आप देखते हो। अब मैं इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसके कट ऑफ, है ना, कि कट ऑफ क्या होगा, मतलब लास्ट ईयर क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट या क्वालिफाइंग फॉर सिचुएशन टेस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स यहाँ जो मैं डिस्कस करूंगा वो है क्वालिफाइंग फॉर सिचुएशन टेस्ट, नॉट फाइनल सिलेक्शन। मैं यहाँ पे किसी सीआरएल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सीआरएल मीन्स कॉमन रैंक लिस्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यस, हाँ साहिल में, हाँ बिल्कुल। हाँ केस स्टडी इजी था इसीलिए मैंने वो 110 लिखा है। अदरवाइज मैं इसको यहीं पे 90 या 75 मेंशन कर रहा होता, बिकॉज केस स्टडी इजी था। अगर लास्ट ईयर से देखा जाए कंपैरिजन में तो काफी इजी था, इसीलिए इसको क्या कंपेयर किया हमने। यस, अभी इसके बाद आपका, बिकॉज सेकेंड राउंड इट मींस सेकेंड राउंड, हम यहाँ बात करेंगे कट ऑफ फॉर सेकेंड राउंड, कि सेकेंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ होगा। ओके, इट मींस अगर कोई एमएफएम स्टूडेंट्स है तो उसके लिए इंटरव्यू हो जाएगा। बी और आपका बीडेस वाला है, ओके, बीडेस वाला है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका सिचुएशन टेस्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसके लिए, सेकेंड राउंड, इट मींस सिचुएशन टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट और इंटरव्यू, इन सब के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। इन दोनों चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। किस चीज की बेटा। यस बेटा, है ना। 110 इज क्वालिफाइंग, नो, 110 इज गुड अटेम्प्ट नॉट क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग तो और इससे कम हो जाएगा ना। अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ तो और भी कम जाएगा, बिकॉज निफ्ट में अगर आप देखो, मैं यहाँ से बीडेस के लिए बात कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर आउट ऑफ 200 लिख रहा हूँ, सीआरएल अलग बनता है बेटा। मैं यहाँ सीआरएल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीआरएल अलग होगा। कॉमन रैंक लिस्ट बनता है आपका किसके बेसिस पे, बीडेस में, वो अलग है। अगर आप कॉमन रैंक लिस्ट की मैं बात करूं, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, इट इज बेस्ड ऑन जीएटी, सीएटी एंड सिचुएशन टेस्ट। इन तीनों के बेसिस पे क्या बनता है आपका, सीआरएल बनता है। मैं सीआरएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वालिफाइंग फॉर सेकेंड राउंड, इट मींस सिचुएशन टेस्ट और इंटरव्यू। ओके, सिचुएशन टेस्ट, इंटरव्यू या पोर्टफोलियो राउंड, इन सब की बात कर रहा हूँ। ना ही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बीडेस एंड बीएफ टेक के कंबाइन एग्जाम। ओके, कट ऑफ अलग अलग होता है बेटा, दोनों के लिए अलग अलग लिख के आएगा आपका, क्वालिफाई फॉर बीएफ टेक और क्वालिफाई फॉर बीडेस, तो आपका दोनों से ही बनता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ निकल के आता है ना। चलो अब मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ बीडेस के लिए। अगर बीडेस का ओवरऑल आपको पता है 200 था, 200 में अगर कोई भी स्टूडेंट 75+, 75+ स्कोर करता है, देन क्वालिफाई फॉर सेकेंड राउंड। ओके, किसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई फॉर सेकेंड राउंड, यानी कि सिचुएशन टेस्ट।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 75 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं देन आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई फॉर सेकेंड राउंड हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर 75 प्लस। नेक्स्ट वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ बी एफ टेक। सेम कंडीशन है, बी एफ टेक में थोड़ा सा आप देखोगे ये स्कोर जाके कितना हो जाएगा, 90 प्लस ओवरऑल, क्वालिफाई फॉर सेकेंड राउंड। नेक्स्ट एमडेस। ओके, एमडेस में अगर मैं देखूंगा ओवरऑल, आप देखोगे एमडेस के लिए, तो एमडेस के लिए भी आपको सिमिलर सेम चीज, क्योंकि लगभग 70 या 80 आपको स्कोर करना होगा, एमडेस के लिए भी सेम चीज है। अगर मैं बात करूं एमएफएम, यस डेफिनेटली बेटा, सी सी 70 प्लस 40 डेफिनेटली क्वालिफाई। एक 110 मतलब अगर आप फाइनल रैंक निकालोगे तो 70 का 35 और 40 का 30 यानी 12, 35 एंड 12 कितना होगा, 50, 47। ओके एंड 10 अराउंड, अगर 50 57 आता है तो एक रैंक भी अच्छा आ जाएगा आपका, है ना। सो 70 एक अच्छा स्कोर है सीएटी में। एससी कैटेगरी एमएफएम, अगर देखो एमएफएम के लिए अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ 150, मतलब 70, अगर फॉर एससी एमएफएम की अगर मैं बात करता हूँ, और अगर आपकी कैटेगरी एससी है, आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हो देन बहुत अच्छा स्कोर है। ओके, 50% से मतलब 50% स्कोर कर रहे हो देन अच्छा स्कोर है। अगर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी एमएफएम की मैं बात करूँ, तो यहाँ आपको एटलीस्ट 95 प्लस चाहिए। कितना, 95 प्लस, है ना। अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज का मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब ना 9। एमएफएम प्लस एमडेस दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, एमएफएम प्लस एमडेस क्वालिफाई आपका सेम, अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल बता देता हूं। एमएफएम के लिए क्वालिफाइंग जो है वो आपका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 75, अगर कितना, मतलब 50%, मोर देन 50%, अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं देन क्वालिफाई हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कमिट किया है कि आपको निफ्ट मुंबई मिलेगा या निफ्ट बैंगलोर, क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ, है ना। निफ्ट मुंबई और निफ्ट, उसके लिए आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, 50% से ज्यादा आपका स्कोर है देन आप क्वालिफाई कर जाएंगे निफ्ट एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली। या डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपका ओबीसी रहे, ओबीसी कैटेगरी है, 70 प्लस 40 है। हाँ 70 से ज्यादा है बेटा तो बेटर है, आपका एससी कैटेगरी है तो फिर इजिली आपका मतलब ओवरऑल 150 आउट ऑफ 150 आपका 70 है, देन अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। 70 से ज्यादा है देन अच्छा स्कोर है भाई। और किसी, ओके ओके, नॉट एन इशू, सॉरी आपने सर की जगह मैम लिख दिया, बट माय ओवरऑल ड्राइंग इज मोर देन वेरी मच, या गुड बेटा, बिकॉज ओवरऑल ड्राइंग अगर आपने बेटर किया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा बना, देन चलेगा। 60 एंड 60, हाँ गुड है बेटा, है ना। अगर आपने 60 जीएटी हो रहा है और 60 यहाँ पे, मतलब 60 प्लस एक अच्छा स्कोर है अगर आप देखेंगे तो। और हाँ, वो दोनों में क्वालिफाई हो जाएगा आपका, और रैंक भी ठीक मिलेगा आपको बेटा, है ना। रैंक भी आपको मतलब वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा, बीएफ टेक में तो होगा नहीं, लेकिन इसके लिए तो सिचुएशन टेस्ट होगा, किसके लिए, क्वालिफाई दोनों के लिए हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा सीरियस है, इस पे अभी ड्राइंग सेशन डिस्कशन होगा। ड्राइंग सेशन सर डिस्कस करेंगे, राजन सर डिस्कस करेंगे, सो डेफिनेटली वो आपके ये कलर और इनसे ड्राइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आंसर दे पाएंगे। मैं आपको एप्टीट्यूड और मतलब जीएटी पार्ट प्लस आपका कट ऑफ इन पे डिस्कस कर पाऊंगा, बट ड्राइंग पे मेरे को उतना अच्छा समझ नहीं है या उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं ड्राइंग पे कोई भी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, ओके। हाँ, बिकॉज जो जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उस पर मुझे नहीं लगता कि मैं राइट पर्सन हूँ आपके इन प्रॉब्लम्स के आंसर देने के लिए, बट अभी सेकंड पार्ट सर कवर करेंगे, पार्ट बी, देन डेफिनेटली वो आपके सारे प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर वन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। नहीं यार, ये थोड़ा सा वहां पे मेंशन किया था कॉपी में, तो स्पेस जहाँ मिलता है वहां तो क्वेश्चन नंबर वन मेंशन होगा। वो डिपेंड्स ऑन, है ना, एग्जामिनर मूड कि शौर्य, है ना, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर मूड वो। बिकॉज आपने तो मिस्टेक किया है, देन डेफिनेटली अगर एग्जामिनर थोड़ा सा रूड हुआ, कंसिडर नहीं किया, तो वो दोनों ही क्रॉस कर देगा बिकॉज ड्राइंग गलत बना हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। बट अंडरस्टैंडिंग हुआ और उसने इतना समझा कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों किए हैं, बट देन वो कंसिडर कर लेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं अगला। काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन कॉमन रैंक। यस, काउंसलिंग जो है वो सीआरएल पे डिपेंड करेगी। अगर आपका सीआरएल बेस्ट है, देन उसके बेस पे ही काउंसलिंग आपका होगा। हाँ यार, थिंग्स आर गुड यार, है ना, मेलोफाइल अगर आपने ओवरऑल ड्राइंग बेटर किया देन गुड, है ना। सो नाउ हम यहाँ पार्ट, है ना, अब हम डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट भी डिस्कस करेंगे। सो पार्ट भी डिस्कस करने के लिए सर डिस्कस करेंगे। सो आपके जो भी ड्राइंग से रिलेटेड डाउट्स हैं, देन सर के साथ डिस्कस करिएगा। तो सर को काफ़ी मतलब मोर देन 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक वो आपको बेटर आंसर कर पाएंगे कि ड्राइंग में आपने कलर किया या नहीं किया। सो, है ना, विच वन इज़ बेटर। सो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। आपको जो पोल है वो दिख जाएगा आज टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो वहाँ आप अटेम्प्ट करिएगा। सो बस है ना, 1 मिनट का ब्रेक, देन इसके बाद आपका ड्राइंग सेशन स्टार्ट होगा।
Hello, friends. Good afternoon. We are here for analyzing NIFT question paper of 2026. I'll be talking about the creative ability test, that is the drawing portion. So, how was it, friends? Yesterday, when you were facing, some of them came out early. I started thinking, why early? But what I found that the students who have had a very good practice, they could do the so-called lengthy paper well in time, and rather more than well in time. In fact, they came out early, completing the paper, not leaving any part of it. Friends, so was it easy? I think it had a mix um, kind of view from different students. To my student, most of them they said it was easy because they had practiced these kind of question quite a lot. Well, friends, my name is Rajendra Bhatia, representing Creative Edge, one of the subsidiaries of Top Ranker, and you are onto the YouTube channel of Creative Edge. Let us work it out one by one. Now, I must also explain you whenever there are options, we have tried solving all the options for you. So be patient, listen to them. You might have done one of them, and well, let's go for it. So NIFT 2026 paper analysis, creative ability test. The first question was of two dimension. There were shapes given: rectangle, circle. Instead of triangle, they had a pear shape and hexagonal. With these shapes, design a bird feeder using the given set of shapes. All shapes must be used at least once. Now that was the catch of it. You may change the size and dimensions of the shapes. Cutting, striking, or removing any part of the shape is not allowed. In all four cases, the bird feeder should be designed to be placed outside a window. Create four different design solutions for the following context. Hanging outside the window of a rooftop restaurant, outside the window of a meditation center, outside the window of an author's office, that means a book writer, maybe, outside the window of an old age home. Let us look into the solution. Although you were supposed to take all this and draw four solutions. Old age home bird feeder. There should be a brainstorming done here. What is the brainstorming? Easy visibility. Safe, rounded edges.
some social interactive element. What is the problem with old age? Less talking or no talking? To such a candidate, if you got a bird talking to an old person, won't you like it? So this is one of very important point. Accessible water ball and emotionally warm design. We all know that old people again, they are emotionally down. So your brainstorming should have written all this and then you give the solution. You can easily recognize this is the circle, this is the triangular part, this is that hexagonal portion. It was my choice to make it whether transparent or opaque. I preferred making it transparent. Right? So we have covered triangle, we have covered hexagonal, we have covered circle, and then there is a semicircle also added up here. Rectangle has been taken care here. Right? So nothing is left out. Rectangle with rounded up edges, rectangle, circle, triangular, hexagonal. Second, meditation center. The form gives a language. As we say, color gives a language, same as the form gives a language. At a minimal disturbance design. Now here, remember, the bird is not supposed to interact um, with the person who is feeding this, but the person wants to see bird taking feed from the feeder. So that is important. So what are the salient feature of this? Calming form language. Now you can see that calming form language. Write that triangular plus oval. Triangular plus oval form is taken as the main shape of the feeder. Then this is hexagonal, if you have noticed it already. Semicircle, full circle, rectangle, and rectangle with rounded edge. Even this could be taken into the same account. So all those things are taken care of. So minimal disturbance design, natural material expression, shape arrangement suggests wood, stone like texture to connect with the nature and promote the serene atmosphere of a meditation center. Water ball at the base, so that she can come here, the bird can come here and feed onto the water as well. Window friendly placement, that is of course there with all the forms that you may be drawing with. Another aspect that I would like to point out here are this
you know, the feed color and the of the bowl, blue color of the bowl. That gives another peaceful atmosphere. Next, rooftop restaurant bird feeder. Hexagonal hanging again. This may sound like repetition of the earlier one. One could choose the feeder as hexagonal, but fine. With a rounded edge, this is that rectangle. Here also rectangle used. Here is a circle used. Here also the circle used. This is the use of the triangle. So, attractive modern look, futuristic combination of shapes to match a stylish rooftop dining space, hanging mechanism, strong top support form for safe suspension outside the window area, multiple feeding surfaces, different shapes create perches and grain holding areas for more birds. Water bowl section is again at the base. Bowl provides water, enhancing the lively dining ambience. Customer engaging, designed to be visually interesting, so diners also enjoy watching birds while eating. Some of them may like to feed the birds, taking out the hand from the window. Next, author's office, bird feeder. You got so many shapes to play with: rectangle, hexagonal, circle, again circle, because you could repeat one of the shape easily. Here is that ellipse shape or the pear shape. Okay, now author that means may like to put books not for the birds but for himself to get satisfied with the look of the books around on the feeder. Quiet and minimal design, reading inspired from form, single bird comfort space, water bowl base, window attachment, stability. Now, one of you could do the water here also and the grains here. So a simplified yet very interesting design in each of these cases. And you were supposed to do all the four of them. Color them also. You might have. I am also reading some of the question in between. People who are done. See, initially
A shape is given, but what is the resultant to be brought in was a 3D object. It is an object drawing. So people who have done only 2D designing may slightly lose onto it. It was supposed to be a 3D model coming out of the shape, converting it into form, and then sketching it. Question second, draw and render a scene depicting a festive season from any one of the option given below. Use only pencil colors. Now you were supposed to do one of them, either this or this or this. I'm going to give you solution for all the three of them. I being into a place where I want to suggest to more number of people. Here is a scene of market inspired from a festive season. So here is a lady who is selling banana leaves and fruits here. Here is a lady trying to buy a garland for selling. Lot of colorful papers around hanging. So this is one of the solution. You can fill up this with more flowers also here, because flowers are also there for, maybe particularly if you talk about the Shera season, then flowers are there for sale separately as well as in garland form. Depending on the region you are representing, you could do different kind of market scene that you might have experienced by yourself. Let us quickly look into what was the second option. A nature retreat in a forest and riverside celebration. So what second I have depicted is the riverside celebration. Think about Bihar. Now in my area also, think about a riverside in a festive season. There are like the diyas, the burning diyas are floated into the river. People they take diyas along with them deep into water uh, and uh, and float them. Couple of sadhus around here, a lady coming into water and dispersing uh, the lamp. My side, it is a little casual sketch, but what I want to say, yes, you could also think about a more detailed one here. Maybe add a couple of figures here. Always remember in a composition, your first two, three figure could be detailed one, rest of them could be drawn only impression wise. Or representational sketches. Now, in a forest,
I have selected a small temple. You go deep into forest at time, you find some very small temple constructed by maybe some hundreds of years back. So there, somebody must have visited the place, put a little rangoli around, put diyas around, and that could be the scene for a forest. You had to do only one of it. We have tried giving you all the three options. We come on to the next question. Okay, taking inspiration from any one of the following objects, like water tap, stool, or bicycle. So you have to take one of this, design a product for any one of the following users. Now, to be honest, this is inviting 3 into 3, inviting 9 answers, 9 variety of answers. I have done only 3 for you for today, explaining them. Inspired from water tap, stool, and bicycle. So design a product for any one of the following users. The design should clearly show the transformation of the chosen object and must be illustrated in use with the user. Now, first of all is street vendor. Look into the beautiful design here. Solar powered purification. Now what I have taken, living water tap, bio inspired smart Pani system for Pani-puri vendor. Inspiration, water tap, plant root system plus lungs. Unique features, solar powered purification, petal nozzles, that means a flower nozzle opens automatically when the puris are being placed below it. Smart memory adjusts the water flow according to the vendor's serving speed. Auto flavor infusion, Pudina and Emily capsule system. Now these are the Pudina and Emily capsule being kept here. And self-cleaning pulse, automatically flushing after every 5 serving, flushing it with water. Clean water, of course. The form language, not a straight tap, used organic curves, fusion of plant and machine forms, and transparent and glowing elements. So here are the different dispensers like Pudina, like Imli, and maybe some lemon water, etc. Then the tap has got a nozzle which has got petals into it. We will be talking about the function also because this is a question of 40 numbers. Right? So we must not only get confined to one sketch. We should explain our product one by one. So here I have explained it. Petal opening step 3 stages, closed position. Here it is closed position. Then partially open. Petal start unfolding when the puri, the Pani-puri ka puri is placed below it. Initial water flow begins here. Of course, you can have a hand derived here, drawn here.
Then fully open petals opens completely and dispenses the required amount of water into the puri. This is the top view of the flower petals, petal arrangement, symmetry, design, aesthetic, and highlighted. Internal mechanism, small cut section. Now here are the petals. Here is the tab, and here is the feeding of the liquids. Petal hinges and joint system. Here, water flow path inside the tab. Sensor placement or wall mechanism. So some sensor placement is here. It will keep the petal open as and when you bring puri below it. My second product, ergonomic support stool for an elderly person. Now here is the folding stool. Yeah, stool folded stool. Here you can adjust the height. Same thing, adjustment of height, adjustable height. Cushioned seat and back. Cushioned. Right, friends? One more product design, very interesting, convertible work bicycle for an office personnel, professional. This advanced commuter bike features integrated GPS navigation and a smart lock. GPS navigation is here. Smart lock system for security that will be here. It also includes a special briefcase holder and a puncture-proof tire. This is that briefcase holder and tubeless tire with nitrogen inside it. So that makes it puncture-proof. All built on a lightweight carbon frame. Lightweight carbon frame is the catch of it. It is designed especially for office going professionals. So this is, of course, well labeled here. Electric assist mode for effortless travel in the traffic. USB charging port for phone, laptop on go. Built-in LED lights for night commuting. Shock absorbing seat for comfortable daily travel. Anti-theft alarm system.
Smart app connectivity to track route, speed, and battery status. So with this, I come to a little conclusion. I would still like to see some of your question and answer them one by one. I see still the question floated by you all are mainly onto the two-dimension design. Thereafter, very few questions are there. Couple of candidates are a little pessimistic about the total marks, but I don't really want to comment what will be the cutoff this year. That is not important right now. What is important is to assess your ability. Not many questions thereafter. So I think I can say here that you will be sending question to us on our website. Get get your doubts clarified. I'm sure you liked how we have tried solving. This year, all the question could have been solved with help of a little coloring onto it, except for these one. And there you could go a little with the black and white and shading thing. Remember, friends, in a scene creation, you should be very much colorful as far as NIFT is concerned. You could also be colorful with the two-dimension design or three-dimension design. Today, I would like to tell you that the paper was very trickily formatted in the sense two-dimension shapes were given and they were to be drawn into 3D object. So I wish you all the best. Let us see what or where you land up. You must have started assessing yourself from our explanation as to where you land up with the aptitude and with the cat portion of it. Okay, thank you very much. Bye bye.